About sexual reproduction in Ectocarpus. Ectocarpus is member of brown algae. This belongs to class Phaeophyceae, characterized by pigment fucoxanthin. This we already have discussed in previous videos in morphology of Ectocarpus. Now, how sexual reproduction take place, we'll discuss in this video in detail. This is with the help of biflagellated motile gametes. Gametes are produced which can move from one place to another, and they have a pair of flagella. One flagella is directed toward this side and second is like this, and it has a nucleus, and this is the gamete having cytoplasm. So this is a motile gamete. As we know that Ectocarpus has heterotrichous plant body. Now this is its gametophytic plant body. This is the prostate system, and this is the erect system, and these are the branches which are arising from the main axis, right? So this is a gametophytic plant. Now this gametophytic plant will bear gametangium, right? Now formation of gametangium is like this. Supposing this is branch, this is branch, and from this branch here an initial will arise, right, which is helping in formation of gametangium. Then this will divide into two and this will enlarge to form a gametangium. This will undergo transverse as well as vertical divisions, right, and this will help in production of the gametangium. Like this will have transverse as vertical divisions like this, and this will be converting into gametangium. So here gametangium will be produced having a stalk cell, right? Like we can see here, this is the stalk cell and this is the gametangium, which is having many locules, right? These are locules. These are locules. We can see here this is having many locules. So this is called as plurilocular gametangium. When it has many chambers, this is called as plurilocular gametangium, and this is the stalk cell by which it is attached with the Ectocarpus plant body, right? So these gametangia are being produced in the Ectocarpus, which are having many chambers, so it is called as plurilocular. Now species of Ectocarpus, it can be dioecious, it can be monoecious. Monoecious means, supposing this is the gametangium and this is producing the gametes, right? These gametes can fuse with each other, or there's another gametangium, this is producing gametes and this is also producing gametes, and they can fuse with each other. Mean gametangia, they may be present on the same plant. They may be arising from the, like gametes may be arising from the same gametangium, or they may be arising from the same gametangium on the same plant, and then it is called as monoecious condition. But when it is from the, supposing this is another plant of the Ectocarpus, and this is bearing the gametangium, and this is also gametangium which is present on another plant, this is producing the gamete, this is also producing the gametes, and they are fusing with each other, right? So then this condition is called as dioecious. Mean gametangia, they are born on different plants and they are producing the gametes, and there is fusion of those gametes. Then this condition is called as dioecious. And when they are born on the same plant, this is called as monoecious. Now, because gametangium is a haploid plant, so these gametangia will be haploid, and gametes which are being produced, they will be also haploid in genetic constitution. Now we can see here, this is the plant body of gametangium. Like we discussed, these are different gametes, different gametangium, plurilocular gametangium, born on the main plant body of Ectocarpus, and these are producing biflagellated motile gametes. We can make the gamete like this is the gamete, this is bearing two flagella, this is having a nucleus and cytoplasm, and this is single haploid in genetic constitution, so this is haploid. Because it has two flagella, so this is called as biflagellated, because this can move from one position to another, so this is motile in nature, right? So Ectocarpus plants, they can be monoecious, mean gametangia, they're born on the same plant. Gametangia are born on the same plant. This is producing gamete, this is producing gamete, and they both are fusing,
or same gametangium can produce the gametes and they can fuse with each other. So this is the monoecious condition. But when it is from the gametangia from different plant, then it is called as dioecious condition. Now sexual reproduction can be of three types. One is isogamous, right? This is isogamous. As the iso word means similar. Gamous means similar gametes. So gametes बनेंगे जिनका size, shape, structure and उनकी activity. I'll give you an example. Supposing this is one gamete, this is another gamete, right? This is bearing flagella, this is bearing flagella. Now both have the same structure, same size, shape, and both can move, right? Movement we can show like this can move like this, right? And this is also motile, this can also move. They will come close to each other like this, right? So they can move, they have same size, they have same shapes, they have same structure. So this like this is the plurilocular gametangium. Plurilocular का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे चैम्बर्स है, जैसे एक चैम्बर हो गया, फिर ये दूसरा चैम्बर हो गया, तीसरा चैम्बर हो गया, हर एक में न्यूक्लियस है, हर एक से एक गैमीट बन सकता है, ठीक है. अब ये जो गैमीट्स है यहाँ से ऐसे रप्चर हो जाते, बाहर आ गए, राइट. अगर दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, राइट, maybe from the same gametangium and maybe from the different gametangium, one being produced from here, another being produced from here, right? If these two gametes, right, like if we make like this is one gamete, this can come and fuse with each other like this, right? And when they come and fuse, or they can fuse like this also, clear? And when they are fusing, right, so these flagella, दे विल बी रिजॉर्ब, मीन ख़त्म हो जाएंगे. ये हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जो हैं गैमीट्स आर फ्यूजिंग विद ईच अदर. उनके जो न्यूक्लियाई हैं गैमीट्स के, मान लीजिए दिस इज़ वन गैमीट, दिस इज़ अनदर गैमीट, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है. सो आई मेक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो लाइक दिस, एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये दोनों न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो गए हैं, राइट. So ये haploid था, this was also haploid. When they have fused, this will become diploid. So ultimately fusion of gametes have taken place and this is called as fertilization. Fusion of gametes is called as fertilization. और fertilization के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक diploid structure बन गया है जिसमें एक diploid nucleus है. This will have cytoplasm of both the gametes, right? Then this is called as zygote. क्या बोलेंगे इसको हम? Zygote, which has a diploid nucleus, where this nucleus is diploid in nature and this is called as zygote. So यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये जो gametes हैं उनका structure, size, shape and behavior equally motile है दोनों. So इसको हम बोलते हैं isogamy या isogamous type of sexual reproduction. Now in some of the species we can see there is physiological anisogamy. Now, what is physiological anisogamy? Fusion of gametes similar in size, shape and structure but differ in activity. सब कुछ मिलता है लेकिन उनकी activity नहीं मिलती. Male gametes, they are more active and motile, and female gametes, they are less active. Right? We can see here, this is one gamete, this is another gamete, female gamete, and this is the male gamete. Right? Now what structure same है, size same है, shape same है, लेकिन जो male gamete है, this can move. 1 minute, I have to do it again just to make you understand. Right? Now this is the male gamete and this can move toward the female gamete like this. Right? And they can fuse with each other. So this is more motile. And this female gamete, this is less motile. Right? But this is more motile. This will reach toward the female gamete. Structure same है, size same है, shape same है, लेकिन male gamete जो है ज़्यादा motile है, ठीक है, as compared to female. उसकी activity ज़्यादा है, activity में differ कर रहे हैं, female gamete less active है. So ultimately दोनों again product will be the same. वो इधर आया यहाँ पर, ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्लैजेला रिजॉर्ब हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे फ्लैजेला,
and there is formation of a diploid structure called as zygote. So this is being produced after fertilization. What is fertilization? Fusion of the gametes. Now here gametes जो fuse कर रहे हैं उनकी behavior different है. One is more motile as compared to another. So this is called as physiological anisogamy. उनका behavior different है. So this is called as physiological anisogamy. So पहला हमने क्या discuss किया है? Isogamous. Second हमने अब क्या किया है? Physiological anisogamy. हम third discuss करेंगे in the next slide. Now this is morphological anisogamy. Now this is one gametangium, this is another gametangium. This is producing smaller gametes, right? So these are called as microgametes. And this is producing bigger gametes, this is called as macrogametes. So macrogametes जो हैं, they are bigger in size, बड़े हैं, उनका size और shape बड़ा है, और जो मैक्रोगैमीट्स हैं उनका साइज एंड शेप छोटा है, और ये मैक्रोगैमीट में रिजर्व फूड मटेरियल भी ज़्यादा होता है, दे आर लेस एक्टिव. एंड ये जो मेल गैमीट्स हैं दे आर मोर एक्टिव, राइट. सो ये जो मेल गैमीट्स हैं, यहाँ पर अगर हम फिर से दिखाएं कि ये जो मेल गैमीट्स हैं दे विल मूव टूवर्ड हियर, राइट. दिस विल ऑल्सो मूव टूवर्ड हियर. तो एक क्लम्प सा बन जाता है माइक्रोगैमीट्स का मैक्रोगैमीट के आसपास. यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे माइक्रोगैमीट पहुँचे हुए हैं टूवर्ड द मैक्रोगैमीट. एंड दिस इज़ द गैमीटेंजियम विच इज़ रिलीजिंग द माइक्रोगैमीट, एंड दिस इज़ द गैमीटेंजियम विच इज़ रिलीजिंग द मैक्रोगैमीट. सो गैमीटेंजियम के बाहर से ऐसे गैमीट आ रहे हैं, ठीक है. और उनमें फ्लैजेला भी आप देख रहे हो, ये मोटाइल है, फ्लैजेला है. सो अल्टीमेटली दोनों का फिर अगर चाहे मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे मैक्रो है या माइक्रो है, दोनों का फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे पहुंचेंगे. लेकिन एक के साथ अगर हम देखें, ये जो है मैक्रो है एंड दिस इज़ द माइक्रो. अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, राइट. तो अगर हम देखें ऐसे फ्यूज़ हो जाएंगे, बड़ा हो गया, छोटा हो गया. सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम डिप्लॉयड इन नेचर. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे क्लम्प सा बना हुआ है, बहुत सारे मेल गैमीट आ गए. इनके फिर फ्लैजेला जब फ्यूजन होगा ख़त्म हो जाएंगे, रीजॉर्ब हो जाएंगे. तो हमारे पास ये दिख रहे हैं कि बड़ा और छोटा फ्यूज़ हो रहे हैं. एंड दिस इज़ हेल्पिंग इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो दिस इज़ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस. एंड क्योंकि फ्लैजेला ख़त्म हो जाते हैं, सो दिस इज़ द ज़ाइगोट, राइट. सो अगेन दिस इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो हमने 3 कैटेगरीज की हैं. आइसोगैमस, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि गैमीट्स का शेप, स्ट्रक्चर, साइज एंड बिहेवियर सिमिलर है. फिर हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस. यहाँ पे हमने देखा कि जो एक फीमेल गैमीट है और एक मेल गैमीट है वो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमीट. स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप दोनों का सेम है. थर्ड हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी. मीन उनका मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है. एक माइक्रो है एंड मैक्रो है. एंड दिस अल्टीमेटली तीनों से हमें क्या बन रहा है? ज़ाइगोट मिल रहा है. ज़ाइगोट इज़ द फ्यूज्ड प्रोडक्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैविंग अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, राइट. नाउ नेक्स्ट दिस डिप्लॉयड zygote with diploid nucleus, right? Flagella नहीं है. This will undergo resting period, then this will start germinating, right? तो इसका जो न्यूक्लियस है ऐसे डिवाइड कर जाएगा. नीचे वाले एक सेल बन जाएगा जो राइजोइडल पार्ट होगा. ऊपर वाला जो है थैलस बनाना शुरू कर देगा. पहले एक न्यूक्लियस बना, फिर 2 बनेंगे, 2 सेल बन गए, फिर 3 बनेंगे, 3 सेल बन गए. तो हमारे पास अल्टीमेटली ये एक्टोकार्पस का ऐसे थैलस बन जाएगा. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये हमारे पास ज़ाइगोट है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, ऐसे वॉल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है. फिर ये ऐसे डिवाइड हुआ, फिर 3 में, ठीक है. नीचे वाला पार्ट राइजोइड में कन्वर्ट हो गया. फिर ये 3 जो है 6 में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड सो ऑन. ऐसे थैलस बनता जाएगा. सो अल्टीमेटली जो ऊपर वाले सेल्स हैं दे विल ऑल्सो डिवेल्प क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा. और जब क्रोमैटोफोर डिवेल्प हो जाएगा इसके अंदर, तो पिगमेंट भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फिलामेंट. और यहाँ से हमारे पास
थैलस बन जाएगा. नाउ दिस थैलस विल बी डिप्लॉयड इन नेचर, राइट. तो पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो मेन प्लांट बॉडी थी, अभी हम देखेंगे दोबारा से, तो वो गैमेटोफिटिक थी. लेकिन अब यहाँ पर ये जो थैलस बन रहा है, दिस इज हैविंग diploid genetic constitution. So this is sporophytic in nature. So this is sporophytic thallus of Ectocarpus, which is diploid in genetic constitution. तो अगर हम पहले वाला देखें, यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो थैलस था, दिस इज हैप्लॉयड, और यहाँ पर ये जो लग रहे हैं, दीज आर गैमेटेंशिया, राइट. सो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो थैलस बन गया है स्पोरोफिटिक. नाउ दिस विल एंटर इनटू asexual reproduction on maturity, right. So in this way, Ectocarpus thallus is produced. Now it is different. This is diploid in genetic constitution. So this is all about sexual reproduction in Ectocarpus. Now thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. And if you have any question, you can ask me in the comment box.